Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing well at home. I'm your teacher, Miss Marine Yasser, and class 1. This is your online GK class. Today the date is 27 September 2021 and the day is Monday. Our today's task is on GK school workbook. Today we will do unit number 15, keeping clean. Today we will do page number 29 and 31. So please take out your GK school workbooks and open the page number 29. An important message for both the groups, Group A students and Group B students. The homework is for both the groups. Group A will do this homework on Tuesday and Group B will do this homework on Monday. This is a page number 29 of your GK school workbook. First of all, write date, homework and day on top of both pages. Question number 1. Guess the habits and color the smiley if it's a good or bad. आपने स्माइली पे कलर्स करने हैं. हैबिट की पिक्चर्स को देख के अगर वो गुड हैं तो आपने इस स्माइली पे कलर करना है और अगर वो बैड है तो आपने इस स्माइली पे कलर करना है. फर्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है वॉशिंग हैंड्स. वॉशिंग हैंड्स इज़ अ गुड हैबिट. तो आप किस स्माइली पे कलर करेंगे? आप इस हैप्पी फेस पे कलर करेंगे. नंबर सेकेंड इज़ प्लेइंग इन मड. नंबर 3 इज़ बाथिंग. नंबर 4 पुटिंग फिंगर इन नोज़. नंबर 5 कटिंग नील्स. आपने इन स्माइलीज पे कलर कर देने हैं. नाउ ओपन द पेज नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 4. टेक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स. अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आप इसको टिक करेंगे. अगर ये स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो आप इसे क्रॉस कर देंगे. नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वी शुड कॉम आवर हेयर्स डेली. हमें हमारे हेयर्स हर रोज़ जो है वो कॉम करने चाहिए. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसे टिक कर दें. नंबर सेकेंड इज़ वी शुड नॉट कट आवर नेल्स वीकली. हमें हमारे नेल्स वीकली नहीं कट करने चाहिए. नंबर 3 ऑलवेज ड्रिंक डर्टी वाटर. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसे टिक करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे क्रॉस कर देंगे. नंबर 4 वी शुड ब्रश टीथ रेगुलरली. नंबर 5 स्पाइटिंग ऑन फ्लोर इज़ अ बैड हैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कलर द पिक्चर एंड बी अ जंप बस्टर. आपने इस पिक्चर पे कलर कर देना है और जंप बस्टर बन जाना है. This is your today's easiest task. I hope you understood your lecture. Allah Hafiz, my dear students. Thank you so much.